sentences, please. सर अब क्लियर है आवाज? आपका इत्तेफाक है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी। अब वॉइस क्लियर है सर? चलिए 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 शुरू करें। जी सर, शुक्रिया सर। मेरी आवाज आ रही है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जी सर, जी सर। Thank you very much, sir, for joining us. Participants, today in the last session of this program, we have a esteemed speaker, and I will say the Erstwhile Director of HRDC AMU, Professor Abdul Rahim Kidwai sahab, popularly known as AR Kidwai sahab. जैसा कि सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में ना बताऊं, एंड आई नो दैट सर नीड नो इंट्रोडक्शन, नाम ही काफ़ी है सर आपका, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट फ्यू very important achievement that sir did 2 PhD, one in second PhD from English literature from University of Leinster, UK, and sir did his advanced certificate in teaching of England as a foreign language for Aston University, UK. Sir has a special interest in literary orientation, English translation, Quranic, international faith dialogue, Islam, and West and स्टाफ डेवलपमेंट. एज फार एज सर की टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो सर का टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 47 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और शायद हम लोग की इतनी एज भी ना हो. एंड सर हैज हैड द बुक 40 बुक्स टू हिज क्रेडिट, इंक्लूडिंग सम एडिटेड बुक्स आल्सो. एज फार एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मैंने बताया कि सर वाज द डायरेक्टर ऑफ HRDC and director of CALM, director of K. Nizami Center for Quranic Studies, director of EAMP, US Embassy English Proficiency Program for AMU schools since 2008. And sir is visiting professor and fellow of Department of English, University of Leinster, UK. With this very short introduction, I would like to invite our respected resource person of today and our guardian, Professor A.R. Kidwai sir, to discuss on the topic academic leadership, sir. So now, mic over to you, sir. Thank you very much, Dr. for my brief introduction. And Dr. Vishal Verma, Dr. Ghosh, am I audible? Can you hear me? Yes, sir, quite audible. Okay, right. So, as you know very well, that I will be sharing some of my observations on this national education policy theme, that's academic leadership. It is there in unit 3, sub-theme number 1, academic leadership. First of all, let me briefly tell you that you have joined an orientation sensitization program, week-long program. Today is your last day. I hope you know well the definition of orientation. देखिए, ये जो वर्ड है ओरिएंटेशन इंग्लिश का, ये निकला है वर्ड ओरिएंट से, ORIENT, ओरिएंट. ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है. इट मींस ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ओरिएंट, और उसका काउंटर पार्ट जो है वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और उसके लिए जो वर्ड टर्म इस्तेमाल होती है वो है ऑक्सीडेंट, OCCIDENT. बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, when we use the word orient or orientation, the idea is to give a sense of direction, to guide you to something. So when we say that this is an orientation program, what is the meaning? The idea is to let you know what does national education policy mean, what does it expect you, what does
it have in mind regarding academic leadership. So the orientation is about the meaning and concept of academic leadership. Another word used for that is sensitization. Sensitization का मतलब भी होता है किसी चीज के बारे में अवेयर करना, किसी चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना। तो इस लेक्चर का और इस प्रोग्राम का जो पर्पस है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एकेडमिक लीडरशिप के बारे में जो कहा गया है वो क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या आइडिया है। दैट इज what is meant by this program, the orientation program. Right. As I said, the key word here is academic leadership. Both the words are related to, both the words are related to you. ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि आप कॉलेज में टीचर हैं या यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। मेन पॉइंट इज दिस academic, you are an academician and you have this designation or role of being an academic. An academic is someone who is associated with learning, with teaching, with research, with publications, with scholarship. That's what an academic is. It comes from the word academy, and academy means scholars are learning. More important word is leadership. अब देखिए ये बहुत ही पॉलिसी मैटर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डॉक्यूमेंट के जरिए टीचर्स का एक नया रोल सेट किया है, आपको एक नया गोल दिया है, आपके कंधे पे एक नया मैंडेट या नई जिम्मेदारी दी। वो क्या है? लीडरशिप। और यहाँ लीडरशिप के माने जो है वो जो इसके जनरल मीनिंग है, चीफ मीनिंग है नेता वाली, दैट इज नॉट द आइडिया। When we say academic leader, it means an academic, a guide. उससे बेहतर वर्ड है जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल होता है, इट इज कॉल्ड मेंटोर, MENTOR। मेंटोर कौन होता है? जो आपसे हाथ मिला के आपके साथ खड़ा हो, जो स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प करे, जो आपको गाइड करे। That's what is a leader. A leader is used here in the sense of a patron, in the sense of an elderly, affectionate person. Leader is used here in the sense of someone who takes you forward. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो विजन है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये बात है कि नाउ ऑनवर्ड फ्रॉम 2020 till many years, all the teachers in the country, they will perform, they will fulfill the role of academic leaders. इसका क्या मतलब है? एकेडमिक लीडर आप हो गए, आपको ये टाइटल मिल गया, तो इसका अर्थ क्या है? इसके
इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इससे क्या बात निकलती है। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था लीडरशिप। तो ये लीडरशिप जो है बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसमें आपका भी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस, इंडिविजुअल, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडवांसमेंट भी है, आप जिस इंस्टीट्यूशन में हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसका डेवलपमेंट है, जो सोसाइटी जिसमें आप हैं उसको आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नेशन बिल्डिंग। ये जो आप काम करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका फल स्वरूप क्या मिलेगा, नेशन बिल्डिंग, taking our great country to greater heights, providing quality education, helping your institution in the ranking। ये बड़े दुख की बात है कि रैंकिंग्स आती रहती हैं, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी। हमारे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है। Hundreds of universities, more than 400, thousands, about 50,000 colleges, millions of teachers, many millions of students. So the size, the quantity is very high. The challenge is quality. इस पे अब आप गौर कीजिए जी। क्वालिटी, हाई रैंकिंग, ए ग्रेड, चाहे वो नैक का हो या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के NIRF का हो या इंटरनेशनल किसी एजेंसी का हो, टाइम्स हायर एजुकेशन का या किसी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन का, दैट इज द टारगेट। अभी मेरे कहा थोड़े दुख की बात है कि इतने कोशिश के बाद so many institutions, so much grant, so much emotional involvement of parents, so much hard work by you, by the teachers. Our universities and colleges are not among the top 500. 100, not 100, not 200, not 300, not 400, only among 500 or 600, and that too one or two Indian Institute of Science or some IIT। और देखिए बिल्कुल मत समझिएगा कि इससे वेस्ट की कोई मोनोपोली है। सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज है, चाइना की बहुत सी यूनिवर्सिटीज है, मलेशिया की यूनिवर्सिटीज है, जापान की है, ये सब नॉन यूरोपियन, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, but they are in the high rank. Why? Because of their quality. तो देखिए अब इस बात पे हम आते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो आपको नया डेजिग्नेशन दिया है,
एकेडमिक लीडर का, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू दे मीन? आपकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? आप में क्या क्वालिटीज होना चाहिए जिससे आप एकेडमिक लीडर बन सकते हैं? और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है उसमें 5-6 क्वालिटीज या फीचर्स या कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। मैं उन्हीं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो कंसेप्ट्स हैं या जो क्वालिटीज और फीचर्स हैं उन्हीं को एक्सप्लेन, एक्सपैंड, इलॉबरेट आपके सामने करूंगा, सो यू हैव ए क्लियर पिक्चर of the meaning of academic leadership. Right. पहली बात तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या कही गई? इट सेज इट शुड बी इफेक्टिव लीडरशिप। नाम के लीडर नहीं चाहिए हमको, काम के लीडर्स चाहिए। इफेक्टिव, ऐसे टीचर्स, ऐसे एकेडमिक लीडर्स who can bring about a change in our educational system, who can improve the quality of our education, who can take the education sector to great heights. That is the goal. That is the objective. इसी के लिए ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, हम आप मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। डॉक्टर फरहा, समझ में आ रही है बात आपके? Yes, sir. एनी Got the कंफ्यूजन? No, 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 not at all, sir. Very clear. Okay. What is your subject? Sir, I teach history. हिस्ट्री। तो देखिए ये इररेलेवेंट है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में, कॉलेज पीजी है या अंडर ग्रेजुएट है, किस स्टेट में है, आपका पे स्केल क्या है। These are not the real issues. The real issue is ensuring quality education. और quality education कैसे आएगी? Only when we have teachers as academic leaders. और academic leader भी कैसे चाहिए? जो effective, जो result oriented, जो go getter हो, जो आउटपुट लाके सामने रखे। लिप सर्विस नहीं चाहिए। वॉक, चॉक एंड टॉक वाले टीचर नहीं चाहिए। आए, चॉक उठाई, 4 बातें बताई, चल दिए, पहली को सैलरी मिल गई। दिस इज नॉट द आइडिया। दिस इज नॉट befitting you. You are in the scheme of things devised by Ministry of Education. You
an academic leader. And what kind of academic leader? Effective. अब ये सवाल उठता है, effective leader आप कैसे बन सकते? इफेक्टिव लीडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इस पॉइंट को वेरी नेचुरल इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया गया है कि स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ मैं नाम देख रहा हूँ, डॉक्टर सहेब का मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, डॉक्टर स्वाधीन का नाम आ रहा है, डॉक्टर फरा का नाम आ रहा है, हर एक का, इससे पहले विशाल वर्मा जी थे, डॉक्टर घोष थे। तो सबका स्टाइल अलग अलग हो सकता है, कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि बस ये सेट मैथमेटिक्स का 2+2=4, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्टाइल होगा, लेकिन कुछ चीजें कॉमन। वो कॉमन चीजें क्या है? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय। सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन। एकेडमिक लीडर कौन होता है या अच्छा टीचर कौन होता है? जिसके पास कम्युनिकेशन का गिफ्ट या एबिलिटी। COM या CO अंग्रेजी में जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है टुगेदर, मोर देन वन पर्सन। तभी चाहे वो वर्ड कॉपरेट हो, चाहे कोलैबोरेट हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, whenever we say co या को सुपरवाइजर हो, कलीग हो, लीग ग्रुप कलीग, you are part of the same group। तो कम्युनिकेशन के बारे में पहली बात तो ये समझ लें आप, the first and foremost point is that it is for the other, not for you। Communication is always for the other। सामने वाला जो है उससे जो बात कही जाती है वो कम्युनिकेशन। To my dear fellow teachers, all of you are teachers, please know this very important point। कम्युनिकेशन में सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कहाँ पर है। अब ये कहाँ का मतलब फिजिकल नहीं है, ज्योग्राफी नहीं, कहाँ से मतलब है वो सिचुएशन क्या है, सेटिंग क्या है, सीन क्या है। डॉक्टर फरा इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। इनकी एक सिचुएशन है क्लासरूम, इनकी एक सिचुएशन है स्टाफ रूम में अपने कलीग के साथ है, एक सिचुएशन है प्रिंसिपल के चैम्बर में बैठी, एक सिचुएशन है किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करना, एक सिचुएशन है कि ये पेपर लिख रही है राइटर। लेट मी टेल यू आल्सो दिस दैट कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज oral or spoken। When we say communication, it includes both oral and written, spoken as well as written। तो डॉक्टर फरहा या आप जैसे जितने भी टीचर हैं, सबका एक सिचुएशन ये है एज राइटर, एकेडमिक राइटर। फिर आपकी सिचुएशन ये भी है, यू आर इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, you are at your home with your spouse, with your children। एक सिचुएशन ये भी है कि आप एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो। लाइफ इज
full of situations. डॉक्टर घोष बताएं, डॉक्टर घोष, am I clear to you? जी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सिचुएशन को देखें। फर्स्ट पॉइंट, ये मैं कम्युनिकेशन की बात बता रहा हूं, तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले ध्यान दें कि आप कहां पर हैं, वेयर आर यू। एंड अगेन लेट मी टेल यू, ये मैं वो लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि फिजिकल लोकेशन, जीपीएस वाला लोकेशन नहीं, बल्कि फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं कह रहा था क्लासरूम, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल का चैम्बर, घर, टैक्सी, एयरपोर्ट, ये सब डिफरेंट सिचुएशन, सोशल सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सामने वाला कौन है, पार्टिसिपेंट कौन है। आपका सीनियर है, बॉस है, या आपके बराबर वाला है, पेयर है, PEER, पेयर, इक्वल है रैंक में, सोशल स्टैंडिंग में, एज ग्रुप में, या फिर वो आपका सबऑर्डिनेट है, या आपसे छोटा है, छोटा एज वाइज, स्टेटस वाइज। ये इसका ध्यान रखना भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत, जैसा सामने वाला है वैसे ही बात की जाए। जिसको हम आप कहेंगे उसको तुम नहीं कहेंगे, जिसको तुम कहेंगे उसे तुम नहीं कहेंगे। तू भी बड़ा फनी वर्ड है हिंदी उर्दू में, इंसल्ट का वर्ड भी है। टैक्सी वाला आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, आप कहे तू क्या कर रहा है, मैं आपको समझता क्या है। और भगवान से जब प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जब नमाज पढ़ रहा हूँ तो मैं गॉड से कहता हूँ तू मेरी कंडीशन को जानता है, तू ही मेरी मदद कर सकता है। बिलवेड के लिए भी तू ही का, चाहे वो आपके बॉलीवुड के फिल्मी गाने हो, चाहे पोइट्री हो, हिंदी की, उर्दू की, तो ये एड्रेस के टर्म्स जो है ये भी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो प्लीज पहली बात तो ये ध्यान रखें, वेयर आर यू। नेक्स्ट इज हु आर यू कम्युनिकेटिंग विद, सामने वाला कौन है। अगर इसका आपने ध्यान नहीं रखा, आपका कम्युनिकेशन, गौर से सुनिए, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, यूजफुल नहीं होगा, बल्कि कभी कभी हार्मफुल हो सकता है। जबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, सामने वाले तक पहुंचता है। अगर उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, बोलने से पहले अगर आपने तौला नहीं और नहीं किया, क्या कह रहे हैं, क्या लैंग्वेज आपकी है, क्या टोन है, यू विल फेस द म्यूजिक। सामने वाला जो है, ही मे फील इंसल्टेड, hurt, offended, and he or she may react very badly.
कम्युनिकेशन में वेयर आर यू, फिर हु, कौन है वो, इसको ध्यान दीजिए। तीसरी बात कम्युनिकेशन के लिए जो बड़ी जरूरी है, जो आपके माइंड में होना चाहिए, वो है पर्पस। व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट? व्हाई आर यू स्पीकिंग? व्हाई आर यू राइटिंग समथिंग? गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? आप क्या चाहते हैं? In other words, clarity of mind. In your mind, you should be very clear. What do you want and how do you want? 40 साल मैंने भी पढ़ाया है, इंग्लिश का मैं टीचर रहा हूँ. So on the basis of my experience, I can tell you the most important quality in a teacher is not his academic degree. होंगे आप हार्वर्ड के PhD. The most important quality is not your publications. होंगे आपके स्कोपस के, एज फैक्टर के, इम्पैक्ट फैक्टर की 20 किताबें, 200 आर्टिकल. The most important quality is not your research projects and patents and these things. I'm telling you the most important quality for a teacher. There are academic distinctions, very good academic qualifications, publications, research work, seminars, conferences which you have attended. All these are academic distinctions, but the most important quality in a teacher is communication. आप कितने ही बड़े स्कॉलर हो, नोबेल प्राइज भी आपको अपने सब्जेक्ट में मिला हो, और आप अपनी बात क्लास में स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा सकते, वो आपका लेक्चर समझ नहीं सकते, then you are not a good teacher. देखिए आप सभी 30, 40, 35 के स्कूल हैं. स्कूल से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको 100 से ज्यादा टीचर्स ने पढ़ाया. कितने याद है आपको? 4, 5, 10. ये कौन लोग वो है? ये वो लोग हैं जो जिनकी बात आपके दिल में, दिमाग में उतर जाती है, जिनके लेक्चर्स आपकी समझ में आ जाते थे, जिनके कंसेप्ट्स क्लियर थे, जिनका कम्युनिकेशन का ढंग, बड़ा स्वभाव बहुत ही सादा था, जिनकी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज सिंपल, लॉजिकल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक, पॉइंट वाइज, प्रिसाइज, स्पेसिफिक होती थी. वही टीचर्स आपको याद, वही आपके एक तरह के आइडियल है. आप जब पढ़ाती हैं, आप लोग तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में, हम लोग तो बीएड नहीं करते, तो हमारे सामने क्या होता है? रोल मॉडल हमारे अच्छे टीचर्स. जैसे वो अच्छे से पढ़ाते थे, वही कोशिश डॉक्टर घोष आप भी करते हैं, आप भी वैसी कोशिश करते हैं. तो टीचर के लिए तो कम्युनिकेशन बिल्कुल लाइफ टाइम बेसिक क्वालिफिकेशन. अगर कम्युनिकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं. मैंने कहा डिग्री होंगी आपके पास, पब्लिकेशन होंगे,
होंगे ढेर के ढेर, और सारे एकेडमिक डिस्टिंक्शन होंगे, लेकिन अगर आपका स्टूडेंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन उसकी समझ में नहीं आता, वो उसके लिए अपीलिंग नहीं है, वो उसके लेवल का नहीं है, वो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो ऐसी टीचिंग से कोई फायदा नहीं। तो प्लीज ध्यान रखें कम्युनिकेशन में, वेयर आर यू, हु आर यू टॉकिंग टू, थर्ड इज व्हाई आर यू कमिंग। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ आर यू कम्युनिकेट, पोलाइट, पोलाइट का मतलब सबमिसिवनेस नहीं, पोलाइट का मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा चाह रहा है वही आप करें, अपनी बात जो आपको करनी है वो करें, उसको रखें, बट द प्रेजेंटेशन, द स्टाइल शुड बी प्लीजिंग, चार्मिंग. I may not agree with you, but still I may have respect for you. I may be your best friend. कम्युनिकेशन में हाउ का भी ध्यान रखें, ऐसा टोन ना हो, ऐसे जेस्चर्स ना हो जिससे सामने वाला हार्ट ऑफेंडेड। तो कम्युनिकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके लेवल का आपको आइडिया होना चाहिए। जो आप 7 साल के अपने बेटे बेटी से जिस तरह से बात करेंगे, वो क्लास में वो लैंग्वेज, वो प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होगी, जो क्लास में होगी वो फॉर्मल सेमिनार में नहीं होगी। जो सेमिनार के जो प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, स्टाइल है, वो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में नहीं होगा। जो मीटिंग में जो आप नॉर्म्स फॉलो करते हैं, जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उस तरह से आप अपने सबऑर्डिनेट से, ऑफिस अटेंडेंट से, टैक्सी ड्राइवर से, होटल रिसेप्शनिस्ट से, होटल के अटेंडेंट से, उससे दूसरी तरह से बात करें। So please keep these norms of communication in mind. Communication is, listen carefully, communication is the key to reaching someone's heart and mind. I don't know you, but once we start talking, I may have liking for you, admiration for you, respect for you. Why? Because of your communication, your presentation. और बाप बेटी हो, बाप बेटा हो, और कम्युनिकेशन अगर सही नहीं है, ब्लड रिलेशन के बाद, इतने गहरे रिश्ते के बाद भी, they may not like each other, they may not have understanding with each other. Why? Because of lack of communication.
तो कम्युनिकेशन टीचर के लिए, एकेडमिक लीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। क्यों? वो सामने वाला आप पे डिपेंड कर रहा है। उसने देखिए फीस दी है, पैसा दिया है, उसने अपना टाइम दिया है, वो सेक्रीफाइस देके आपके सामने बैठा है 9 to 2, 5 घंटे प्राइम टाइम जो होता है। और अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा, नेचुरली they will be frustrated, they will mock you, they will be angry, they will be disappointed, they will be demotivated. आपका तो कम्युनिकेशन ऐसा हो जिससे उनको इंस्पिरेशन आगे बढ़ने का, आसमान तक पहुंचने का, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इनकरेजिंग, हैंड होल्डिंग। ये सब कैसे हो सकता है? थ्रू कम्युनिकेशन। आई होप it is clear to you that communication is the key to success, particularly for a teacher. और अगर इंग्लिश आपकी वो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू डेवलप कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। जरूर आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी और अंग्रेजी में आपकी एजुकेशन भी हुई होगी, बट लर्निंग इज अनएंडिंग। English language is full of funny things. अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जी उसने क्या कहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, मत करना, किसी को बताना। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारा देश डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। आप में से कोई मुझको बताएगा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताएगा? एनी वन ऑफ यू प्लीज। बताएं डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है? Sir, it's the government of people, by the people, for the people. जी जोर से बोले, आवाज क्लियर नहीं आ रही। डॉक्टर फराह क्या बता रही हैं आप? Yes, sir, it's the government of the people, by the people, for the people. वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए डॉक्टर फराह ने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन बताई डेमोक्रेसी की। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर फराह ध्यान से सुनिए। Yes, sir, yes, sir. Democracy is a form of government of the people, O double F, of the people, for the people, FAR, for the people,
BYE by BYE by the people. Goodbye people. Same meaning, different meaning. It's very different, sir. थोड़ी different हुई, बिल्कुल different हो गई. बिल्कुल different, sir. फिर ये क्या है? लैंग्वेज का कमाल है. OF एक माने OFF ऑफ कर दिया, प्रोनाउंसिएशन वही है, इसका मतलब हो गया ऑफ, यूजलेस. FAR फार, फार का मतलब होता है दूर. दूसरी एग्जांपल देखें आप. सैड, LY आपने लगा दिया, क्या हो गया? सैडली. सैडली का क्या मतलब हुआ? इन अ सैड कंडीशन. जब भी हम LY लगाते हैं तो उसका मतलब होता है इन दैट कंडीशन. सैडली, बैडली, हैप्पीली. अब देखिए 4 इंग्लिश के वर्ड हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. शॉर्ट, शॉर्टली. शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, शॉर्टली का मतलब होता है जल्दी. I will return shortly. You'll get the letter shortly. शॉर्ट से उसका कोई लेना देना नहीं. नियर, नियरली. नियर का मतलब होता है करीब, नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट. नियर से उसका कोई मतलब नहीं. लेट, लेट का मतलब सब जानते हैं देर. लेटली जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट. आई एम लेटली रीडिंग दिस नॉवेल. ये नहीं मतलब है कि मैं देर से उस नावल को पढ़ रहा हूँ, आजकल मैं इस नावल को पढ़ रहा हूँ. ऑफ लेट देयर हैज बीन a political unrest in Bangladesh. Of late, recently. She works hard, she hardly works. बताइए दोनों का मतलब एक है, फर्क है. She works hard or she hardly works. Sir, there's a vast difference in both the sentences. जी बिल्कुल फर्क हो गया. जी. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई लैंग्वेज हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, अनलिमिटेड उसके वर्ड्स, उसके यूसेज, उसका ईडियम, और कोई भी आदमी टोटल मास्टरी नहीं कर सकता, पूरा उस पर कमांड नहीं हो सकता. लेकिन कोशिश करें. क्या कोशिश करें? ज्यादा से ज्यादा अपनी शब्दकोश जो है, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा सीखने. और बहुत आसान है. आप लोग तो बहुत ही फॉर्चुनेट हैं. हम तो अपने जमाने में डिक्शनरी देखते थे, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी रखते थे. आपके लिए टच बटन है, इंटरनेट खोलिए और hundreds and hundreds of presentations are there about improving your pronunciation, improving preposition. ऐसे ऐसे उमदा फौरन समझ में आ जाते हैं, पिक्चर्स के साथ होते हैं. about tenses, about preposition, about vocabulary. दूसरा उसका तरीका ये है कि जब भी आप कुछ सुने अंग्रेजी में, स्पीच सुने, ड्रामा देखें, फिल्म देखें, नॉवेल पढ़ें, कुछ भी करें, उसको ध्यान पूर्वक करें. कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग हुआ है, इसको अगर आपने ध्यान से देख लिया, योर लैंग्वेज विल, you will be a better communicator. देखिए आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूं. कम्युनिकेशन. I like
tea. I dislike coffee. I hate crimes. I detest child labor. I loathe violence. I denounce terrorism. कहाँ से मैंने शुरू किया? डिसलाइक्स. ये सारे वर्ड जो भी मैंने यूज किए, डिसलाइक, डिटेस्ट, लोथ, एबहॉर, डिनाउंस, सबका मतलब डिसलाइक. लेकिन सिचुएशन जैसी होती है, अब ये चाय, कॉफी, अमरूद, सेब, कोई चीज पसंद है नहीं पसंद है, उसके लिए ऑर्डिनरी वर्ड डिसलाइक. क्राइम जो है अब ये सीरियस मामला होगा, तो आई हेट. उससे भी ज्यादा सीरियस चीज है वायलेंस, ब्लडशेड. सो आई लोथ इट और abhor it. Terrorism is the worst thing. Why? Because you are killing innocent person for no fault. So I denounce. ये किस चीज का कमाल है? ये है कम्युनिकेशन. सही वर्ड को सही सिचुएशन में यूज करने से मैंने अपनी पूरी इमोशनल, मेरी जो फीलिंग है, जो मेरा इनर मोस्ट बिलीफ है, वो भी मैंने प्रेजेंट कर दिया. दिस इज कम्युनिकेशन. सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज quite easy. Only thing you need is observation. Intensive listening and reading. That will make you rich in your expression, in your language, in your communication, in your vocabulary. Vocabulary means word power. Okay, that was the first quality of an academic leader, communication. According to National Education Policy document, the second quality, the second concept of the second feature is empathy. करने की इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है. PATHOS, पैथोस, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है फीलिंग. Sympathy, same feeling. The mother of your friend died, he is sad, you are also sad, so this is sympathy. डॉक्यूमेंट में क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? एम्पैथी, EMPATHY. इसको समझे. एक उससे पहले एक वर्ड और समझ ले, एंटीपैथी. एंटी मीन्स अपोजिट. आई हैव एंटीपैथी टू वायलेंट ग्रुप्स. नेगेटिव फीलिंग, दैट इज एंटीपैथी. राइट, अब देखिए ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वर्ड आया है एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब होता है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूं, 2 या 3 एग्जाम्पल दूंगा, मीनिंग इसकी क्लियर हो जाएगी. महात्मा गांधी 25 ईयर्स ओल्ड, इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेके आए. साउथ अफ्रीका वो लीगल प्रैक्टिस करने के लिए गए. हु इज महात्मा गांधी? एन इंडियन. कहाँ गए? साउथ अफ्रीका. वहां क्या देखा उन्होंने कि वाइट मैन जो हैं वो रूलर्स हैं, और जो अफ्रीकन ब्लैक हैं उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हैं. पार्क में बेंच है, उस पर नोटिस लगा है, ब्लैक्स नॉट अलाउड. ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ब्लैक्स नॉट अलाउड. टी हाउस है, कैफे है, ब्लैक्स नॉट अलाउड. सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास सिटी. गांधी जी protested against it. This is
empathy. Gandhiji was not a black, Gandhiji was not an African, but for when you show sympathy to others, not to friends, if you show it, then it is sympathy for friends and family, but outside that, other people, if there are other people, and if you have kindness, affection, justice towards them, it is called empathy. I'll give you another example. There was an English, if there is any student of English literature, he or she will follow it better. English novelist, his name was E.M. Foster, one of the former vice chancellors of my university and university. Sarras Masood, he went to England and they became friends. Masood invited him to India in 1920. He came to India, Delhi, Hyderabad, Bhopal, Calcutta. He liked India. He went to many temples. He attended Krishnashtami, Janmashtami program. He went to some malls. He went to Malabar cave. When he returned to England and look, so he liked India very much. At the same time, he saw the white British rulers. They were very cruel, very unkind to India. In Jallianwala Bagh, General Dyer opened fire and thousands of innocent Indians were killed within 1 hour. He was horrified. He was shocked. And he wrote a novel. The title of the novel is A Passage to India. In that novel, he condemns the British. Who was he? A British. Who was he? A white. Who was he? An Englishman, not an Indian, but he condemned the English people for their horrible treatment of Indians. So, standing up for justice, for love for others is called empathy. Why Ministry of Education? Why this policy has mentioned this quality as an important feature? Because you know very well ours is a multi-faith, multicultural, multilingual, multi-regional country. Your student, you are a Bengali and your student may be from Kerala. I may be a Muslim and I may have a Hindu student from Gujarat. I follow one culture, North Indian culture, but my student is from Adivasi culture. Respect, tolerance for others, that is called empathy. A teacher is like parent, गुरु आपको पता ही है प्राचीन भारत में गुरु की क्या इमेज next to God. He doesn't have any religion. He doesn't believe in caste, color, or his love, affection is for everyone. That's empathy. The
third quality is grit. Grit is determination, decision to move forward. Yes, there may be many obstacles. आपके कॉलेज में फंड्स नहीं होंगे, लैब्स नहीं होंगी, साइंस सब्जेक्ट्स के इक्विपमेंट नहीं होंगे, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होंगी, मैनेजमेंट की तरफ से एक्सप्लॉइटेशन होगा, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होगी, ग्रेड के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही है, टाइम पे नहीं मिल रही है, challenges, problems, but still following your goal. That is great. The third quality. The fourth quality is mentioned in the policy document is focus. Should have a very clear idea of the what is your goal, what is your object, what do you have to achieve. You have to achieve academic excellence. You have to work for better quality of education. You should be 100% focused on this. You should devote your time, money, and energy to this. This is the quality of an academic lead. This is what is expected of you. Next, the last point mentioned here is institutional development. You should work hard. सबसे पहले तो अपना एडवांसमेंट करें, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल्स, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो, चाहे वो डिलीवरी सिस्टम की हो, चाहे वो एज स्कॉलर हो, सबसे पहले उसको डेवलप करें, इम्प्रूव करें. नेक्स्ट इज योर स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स का सिर्फ ये नहीं है, आपके सामने ये गोल नहीं है कि वो इम्तिहान में पास. Yes, getting a degree is important, but equally important is please train them to be good citizens of the country. Guide them to be better human beings. Guide them to be better persons. तो सिर्फ उनकी एकेडमिक ही नहीं बल्कि उनकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल नीड्स का भी ध्यान. ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं कि अगर आपके स्टूडेंट को फिजिकली चैलेंज है, मोर अटेंशन, मोर केयर टू देम. फाइनेंशियली अगर वो अंडर प्रिविलेज है, राइट हेल्प देम पर्सनली or through some NGO, through some trust which provides scholarships so that they can focus on their study. तो पहले तो सबसे पहले अपना भला करें,
कि अपने स्टूडेंट्स का करें, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये चाहती है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन का भी भला चाहें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, चाहे वो लिटरेरी प्रोग्राम्स हो, चाहे वो लैंग्वेज लैब हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो इंटरनेट की फैसिलिटी हो, चाहे वो साइबर लाइब्रेरी हो, जिस जिस चीज की जरूरत है आपके इंस्टीट्यूशन में, which may contribute to better academic results, please take care of that. आपके इंस्टीट्यूशन में अगर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल नहीं है, गेट वन। जितने टीचर्स हैं उनको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज क्वालिटी, व्हाट इज मेंट बाय इट, व्हाट आर इट्स नॉर्म्स, व्हाट आर इट्स स्टैंडर्ड्स, हाउ कैन वी अचीव बेटर एकेडमिक रिजल्ट्स, इसकी भी आपको फिक्र करना चाहिए। आपके इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कंटिन्यू टू दैट। ये नहीं कि दान देने लगे, बट यू हैव टू सिट टुगेदर, feel concerned about it, discuss how to raise funds for your institution। ये बात मैं जरूर बता दूं कि अब फ्यूचर जो है दैट इज सेल्फ फाइनेंसिंग। किसी भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिस किसी की भी गवर्नमेंट हो, उसके लिए अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो 100% ग्रांट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट। वेस्ट में इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा 50 साल से क्या मॉडल चल रहा है, लोन्स, फीस से कॉलेज यूनिवर्सिटी की इनकम, फीस बहुत ज्यादा होती है, लाखों रुपए फीस होती है। स्टूडेंट कहाँ से लाएगा? स्टूडेंट के पास है, उसके पेरेंट्स के पास है। तो वहाँ सिस्टम है वही यहाँ हमारे देश में भी आ गया है, आने वाला है। स्टूडेंट्स बैंक से लोन जब जॉब में आ जाए वो अमाउंट बैंक को वापस, तो उनके पेरेंट्स के ऊपर भी बोझ नहीं पड़े। कॉलेज इंस्टीट्यूशंस को सैलरी के लिए पैसा चाहिए, फीस से जमा करें, फीस से नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने इंतजाम किया है, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लीजिए, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में वो लोन वापस। कैसे वापस करेंगे आप? जब आपके अपने रिसोर्स जनरेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल autonomy, no more dependence on government grant। ये मॉडल हायर एजुकेशन में
बहुत जल्दी आने वाला है. Again, let me tell you, it does not have to do anything with any political party. कोई भी political party हो, financially possible नहीं है कि billions and billions of rupees educational grant में. आपके सामने एग्जाम्पल है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, शानदार बिल्डिंग्स हैं, दे आर थ्राइविंग, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हो. अशोका यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल देखिए आप, एमईटी की, मणिपाल की. Self-financing. Yes, Dr. Faiza, most welcome. I'm just winding it up. No, So it's that okay. is, Yeah, please take your time. We will no, have the it is, validity. Please wind it up. is all right. So this is a serious challenge to higher education system. So you as members of the education sector, as future of the country, as academic leaders, think about this challenge to higher education system that is of financial management. So this role of academic leader is very broad based. It is about your personality development, it is about quality education, it is about better management of institution, it is about the development of your education system. This is your new role, and I wish each one of you the best. I'm sure you will rise to the occasion. You will perform this new role prescribed for you by the Ministry of Education. I wish you every success. So I hand it over to now Dr. Faiza Basi, Director UGC HRDC. Thank you. She is an example of this academic leadership. Over the years, she has been organizing literally hundreds of highly successful courses on NEP. She has organized a scores of courses and other, I don't have to add this, FIPs and subject refresher courses, so many other programs. What for? Towards the goal of achieving academic excellence. So the mantle is on you now. Thank Please take this torch further and illuminate the entire country. It is in everyone's interest. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Professor Kidwai, for this session and for the very, very effective closing remarks, which happen to be the closing remarks for the entire course, actually. Thank you very much. Please Okay. carry on. Okay. It's so Thank great. you. So I'm so grateful to you for giving me this opportunity. Thank you very much. Okay, please I'm go sure ahead. yeah, thank you so much. I'm sure the Okay. participants enjoyed. And Okay. 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 So after Abhay, we can start the Okay. valedictory as Yeah. our last resource person of the course has logged off. Yes. And after that, we can have the question answer session. Sure, ma'am. I've already announced. Thank you, ma'am, for joining us. Participants, as I promised you that today our Director of the HRDC AMU will join in the program of valedictory session. And now she has joined. Dr. Faiza Abbasi, Madam Director, UGC MMTTP Program. Participants,
Without any delay, I would like to get permission from ma'am to start our directive session. Yes, yeah, let us start. If there are some feedback speakers, Yes, ma'am. I'm very eager to listen to them, and then we can bring this event to a close. Sure, ma'am. For participants, traditionally we ask your suggestion, your feedback regarding our this 1 week program, that is 8 days and 16 lectures. In this regard, I would like to ask your feedback. If you have voluntarily give any feedback about this program, तो आप चाहें तो अपना कोई फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में. मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का. मैं चाहूँ कि आप वॉलंटरली अपने अपने ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे रखें. कोई एक दो लोग, I जी, think ma'am. one, yes, just one female participant and one male, or maybe one local, one external. जी, अशरफ साहब, जी सर, जी सर. आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोग्राम के बारे में? फिर इसके बाद मैं फरहान मैम से कहूंगा. सर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा. मेरे ख्याल से काफी कारगर भी रहा, क्योंकि हर एक सेशन जो था दैट वाज रिलेटेड टू आवर जॉब. एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकल चीजें थी जो सारी चीजें हुई, और आई थिंक काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे करियर में इंशाल्लाह. और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहे. और इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने के लिए मैं आपको दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें सीखा है, और हमने तो कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं कि उन पे अब हमें काम करना है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर, नथिंग एल्स. आप अशरफ साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे हैं? सर आई एम फ्रॉम कश्मीर, एंड आई एम वर्किंग एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी राइट नाउ इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. थैंक यू अशरफ साहब, शुक्रिया. फरहा मैम फ्रॉम, आई थिंक फ्रॉम विमेंस कॉलेज. फरहा आबिदीन मैम, कैन यू हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All the speakers were very effective, ma'am and sir. And I would just say that I'm so happy, I'm so glad that I joined this course, and I learned a lot. Each one of them were very effective, and it was very useful for us. So I'm very happy that I joined. Initially, I was like thinking that I should have joined refresher course, but this was so good. So I'm so glad that Faiza ma'am, you suggested me to join this course. I'm so glad. Thanks. And this is all. Yes. हाँ. कल के भी हमारे आसिम जफर सर का बहुत ही इफेक्टिव था. आज भी डायरेक्टर साहब जो हमारे यूजीसी के थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला. Each मैम ने अभी आज शाम के सेशन में, that was also very good and informative. So all of them were very, yes, yeah, sir. All of them were very good, very like useful lectures. विशाल सर, विशाल वर्मा सर, कैन यू हियर मी? विशाल सर, मैं चाह रहा था मैं कोई बाहर से पार्टिसिपेंट अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं. जी सर, मैं मोहम्मद मोतिर रहमान. जी बताएं. जी, मैं शोबे उर्दू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ. ये मैम और कोऑर्डिनेटर सर से ये कहना चाहता हूँ कि NEP 2020 पर ये मुनाकिद ये शॉर्ट टर्म कोर्स था. वाकई ये नहायत इफ़ेक्टिव, यूज़फुल और मौसर रहा, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन के बाकमाल स्पीकर इसमें शरीक रहे, और उन्होंने कीमती लेक्चर से हम लोगों को मुस्तफ़ीद किया है, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है. क्योंकि हमारे यहाँ NEP 2020 लागू हो चुका है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में, और चूँकि मैं कोर्स का भी जनरेट करने का कुरिकुलम का मैं एक मेंबर रहा, तो उसमें भी सीखने को मिला. लेकिन ये ख्वाहिश थी कि मज़ीद कुछ मैं जानूँ. तो इस तरह के जो मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन के जो कोर्सेज़ होते हैं, तो वो मुझे, चूँकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए मैं, चूँकि मैं उर्दू का आदमी हूँ, लेकिन फिर भी ये मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन से इंटरेस्ट होने की वजह से मैं इस कोर्स को ज्वाइन किया, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप डायरेक्टर मैम साहबा और साथ साथ कोऑर्डिनेटर साहब जो हैं, तो उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ साथ मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना बेहतरीन सेशन ये कोर्स का उन्होंने इनेकाद किया है. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का, और ये सिलसिला कायम रहे यूँ ही.
और जाहिर सी बात है कि जो HRDC है मानू का, ये अलीगढ़ का, वो वाकई बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही कीमती है। मैंने यहाँ से रिफ्रेशर भी किया था, तो मैं बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया मैम, शुक्रिया कोऑर्डिनेटर साहब। सुभाष चंद्र जी ने हैंड रेस किया है। शुक्रिया मुतुर रहमान साहब। सुभाष चंद्र कुछ कहना चाहते हैं? सुभाष चंद्र मंडल, या गलती से हाथ उठ गया है? Yes, नहीं sir. जी जी। Sir, I am from West Bengal and sir Fatehpuria College from Murshidabad district. So I have completed many workshop program, many refreshers courses also, and orientation program. But this program was to me very knowledgeable program, and from this knowledgeable program, I've learned many things. And every teachers, every resource persons also, they have contributed their maximum knowledge for us. So from this NEP program, I am very knowledgeable, and of course I congratulate the every resource persons, and of course the HRDC and Aftab sir, Apko, and everybody also. And I congratulation from me to every participants and everybody. Thank you, sir. Thank you, Subhash sir. Now I would like to request our director ma'am, Dr. Faiza Abbasi ma'am. As I know that ma'am is not only an academician, not only a good administrator, not only a researcher, not only a good resource person, but she is also a very, I will say, a good lady for us, and a kind of guardian for us, who always encourage us to come ahead and participate and organize such kind of program. With this brief introduction, I would like to request ma'am to say a few words to our participants. Please, Thank ma'am. you. Thank you. Thank you so much, Dr. Aftab, for welcoming me in your course. This course has been excellent, not just because it was an MMTTC AMU course, or not just because it was an NEP course, but also because it was coordinated by you, and because all our NEP courses are in the able hands of the wonderful team at the Department of Education that we have with Professor Sajid Jamal and you and your colleagues. So great to listen to the feedback of Dr. Ashraful and Dr. Matiur Rahman and Dr. Farah, some of you being our own teachers and some of you being teachers of other universities who have joined us on this platform. I hope you learned substantially during this course about the National Education Policy. I hope because of what you have learned, some of the apprehensions, doubts, or general queries about the implementation of the National Education Policy have been resolved, and it will be easier for you to implement it in your respective institutions. And that's how the entire higher education sector of the country prepares towards being world leaders in knowledge sharing, knowledge management, being Vishwa Gurus, and towards having a world-class university. You would have learned about multidisciplinary and holistic education. You would have learned about the linkages between society and higher education. You would have learned about how the suboptimal academic leadership and governance of the HEIs of the country needs to be overhauled, and hence needs to take our institutions forward in quality, in excellence, and in raising academic standards. Thank you so much for coming to us, for coming, be it an online platform, for coming to our online platform here at the Aligarh Muslim University. I'm very grateful to all my resource persons who found out the time for you all, starting with Professor Anisur Rahman. And I've just heard you showering praises on Professor Asim Zafar and Dr. Shakila Shamsu, and you also had Professor Sufyan Beg to speak to you, and just now Professor Abdurrahim Kidwai has also spoken to you.
So, as you gear up for redefining your roles in higher education, leadership, research, training, teaching, learning, as well as innovation, I extend to you all my very best wishes for being able to do it very well in future, both in your careers as well as for the reputation management of your respective host institution where you're working, where you come from. The UGC MMTTC AMU is conducting a lot of other online courses. Uh, the faculty induction program, the subject refresher courses, some of them are interdisciplinary and some of them are discipline based, subject specific subject refresher courses. You're welcome to apply for them. You're welcome to come back to us. I know some of you have already done either an FIP or an SRC from here with us. And if you've had any good experience with us, we request you to spread the word, to spread our word in your colleagues, in your friends, in your people at the workplace, for joining us in the NEP courses in large numbers, because NEP happens to be the mandate of the entire education sector, and it puts the onus back on the teacher for taking the sector forward. It wants to re-establish the position of the teacher in the higher education sector. So you would have already done one MCQ. You are requested to do one more MCQ today. Dr. Aftab and our team, our technical team, will be very soon executing it with you. And in a couple of days' time, your certificates will be issued. You can download your certificates from a digital code using the link that we post for you on your WhatsApp group. You can save the link and you can download the certificate as many times as possible, because this is a digital certificate. And you don't need a relieving order, because you were not relieved from your duties. And kudos to you all for being engaged in your own teaching and learning from morning till evening, and then again post late evening up to now. You know, it's well past sunset. You're here with us, and I must at the same time say kudos to Dr. Aftab and our resource persons for sparing so much of time. You know, we have so many responsibilities, all of us. We have so much to do. Every faculty, I must say, is an institution in itself. Every faculty. And being an institution in yourself, you have teaching, you have evaluation, you have research, you have admissions, you have experiments, you have practicals, and then there is NAC, and then there is IQAC, and there are so many avenues that keep you busy. Still, you were here with us up to late evening. Thank you so much. I wish you the very best for your careers, for your personal goals, and for all happiness, prosperity, and fulfillment in your family life. Do come back to us whenever you have the requirement of professional development, of learning something more, and of revitalizing and reinvigorating yourself to any extent. So thank you, Dr. Aftab. It's over to you for conducting the test, and then it will be a final goodbye to all the participants. But we do hope that they will come back to us for some other course. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your nice and beautiful words for us. Yes, ma'am. Thank you so much for your beautiful words. Indeed. Always, it's so like your voice is so mesmerizing. I just love your voice, the way you speak. It's so good, ma'am. Excellent. Thank you, Dr. Farah. It was such a pleasure having you in this course, and we would like to have you back with us anytime. You are the one of the very active participants of this program. Yes, I'm sure. I really enjoyed, sir. I really enjoyed it. Thank you, sir. Thank you, Aftab, sir. Wonderful. Thank you, ma'am. Once again, thank you. Take care. Bye-bye. Shukriya, ma'am. Participants, soon you will get the MCQ on your WhatsApp group, so kindly wait. And Madrasa will tell detail about that MCQ. और
जिनका रह गया उसके बारे में मजा साहब बता देंगे अभी आपको, फरहान मैम पर्टिकुलरली। अभी मैं मजा साहब बताता हूँ, आप एक बार मजा से बात कर लीजिएगा फरहान मैम अभी। जी जी सर, वो कर लिया, हो गया, उन्होंने मुझे भेज दिया था। कल उनको बता दिया था। यस सर, यस, थैंक तो यू कोई सर। नया क्वेश्चन आपको अरेंज कर देंगे। जी जी। आप लोग अपना व्हाट्सएप चेक करिए, 2 मिनट में मैसेज। सर टाइम लिमिट कितनी है? शायद 1 घंटा, वैसे वो सर बताएंगे क्लियरली, बट आई थिंक इट्स फॉर 1 आवर। अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। Participants, Mazhar Saab is here, and I hope that he will announce about your question and timing, etc. I'm sending the link for the paper MCQ in the in WhatsApp group. Okay. सर टाइम लिमिट बता दीजिएगा प्लीज। 1 hour. And it's 1 hour. ओके सर, थैंक। It's being shared. Okay. Okay, okay sir. ओके सर, ओके सर। अरे को फॉर्म भरा था। अच्छा, उसका फॉर्म करिए।